वेलकम बैक टू द मेन सेशन। अब आप ग्रुप वाइज संक्षेप में कृपया जो आपके आउटकम था डिस्कशन का वो बताएं ताकि मैं नोट करूं और फिर उसी हिसाब से आगे हम काम करें भविष्य में। तो ग्रुप नंबर 1 में प्रेजेंट कौन करेगा? Sir, I'll go ahead and do that. I will do it. Please go ahead. So, the learnings that I'll give a summation of the learnings that everybody shared. So, for the people who thought that they're beginners, they got more clarity throughout these sessions in the Vasa. Mahanidan Sutta was also very helpful to reinforce more faith for almost all of us. And also, it helped in understanding dependent origination. It also helped in people's analytical meditation and Dhamma Vichay. So that has increased. For Brahmajal Sutta, the sharing was that it helped clear wrong view for some of us, and there were some of us who might have had some struggle with believing in um, um the cosmology part, and that belief has now increased after reading or studying Brahmajal Sutta. With the practice in the Mahanidan Sutta, there was an acknowledgement, there is a clear movement from intellectualizing the concepts to actually realizing them with an increased awareness of emotions and while remaining conscious of the emotions and working on them through the structure of dependent origination. So that was another share. And for some of us, it reinforced having less karta bhav. So ये कुछ learnings की sharing थी. क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस आए थे. एक तो ये कि ब्रह्मजाल सुत्त में जब कसीना की बात हुई वहां पे ज्यादा क्लैरिटी की नीड थी, स्पेशली अगर ब्रेथ को ऑब्जेक्ट मानते हैं तो उसे विजुअलाइज कैसे करना है. सो एक ये क्वेश्चन था. The question is not now present in the group. So the next question is कि मिडिल पाथ को यूज करते हुए हाउ टू ब्रेक द साइकिल ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन. सो ये दूसरा क्वेश्चन था जिसकी क्लैरिटी की जरूरत. कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? में समझ नहीं आया. पहला वाला सर. नहीं, दूसरा वाला. मिडिल पाथ को यूज करते हुए हाउ टू ब्रेक द साइकिल ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन. एनीवे, ठीक. मैं आपको मैं आई राउट द क्वेश्चन टू यू. Because the dependent origination is called the middle path. So I can't figure out क्या question. Anyway, you can tell me more about it. जी. तो ये दो क्वेश्चंस थे. उसके बाद टू द सजेशंस. एक ये था कि जब आपने सेशंस हर सुक्त के बाद सर समराइजेशन एडेड मोर डेप्थ टू इट. सो if we have those summarizations, that would be good if we continue to have them. The next was if we can have more learnings and application of the Brahmajal Sutta. Then if more practice can happen on Mahanidan and Sakkapanna Sutta, that was another suggestion. Then in our everyday sessions, if we can have 15 to 20 minutes of theory every day and 40 minutes of practice on the same theory, that would be more effective.
Then some hands-on exercises or some additional details in terms of tools for Indriya Samvar can be shared. जी Then if we can have, for the next vasa, I'm assuming, less number of suttas and also breakout sessions after every sutta, which increases inspiration and clarity for the attendees. And another suggestion there is, now that the vasa is over, if we can take one sutta at a time and do more practice. Then the next is, someone shared that Sati Sampajanya is a very important concept to them. And so mindfulness of clear comprehension of impermanence, which is what they summed it as, if we can have more practice of that, more practice of Sati Sampajanya, that is also requested. And the last was that when we do chanting and then we move to the presentation, between that, if we can have like a 5 minute worth of quiet time where somebody can guide us, where we can make the intention as to how to receive the presentation, that can also be helpful. With that, I think I've covered everything, unless anybody in my group wants to. Thank you very much. Thank you for clear questions. Very good. Group number 2, तो रूम नंबर 2 में कौन प्रेजेंट करेंगे? जी इधर सवाल दो। थैंक यू। जो मैंने नया क्या सीखा उसमें बड़े स्पेसिफिक हमारे पास पॉइंट्स थे। एक तो ध्यान का कॉन्सेप्ट क्लियर भी हुआ और उसकी कंटेंट क्लियर हुई, तो इट इज एनेबलिंग द पर्सन टू एक्चुअली प्रैक्टिस एंड ट्राई टू वर्क इन दैट डायरेक्शन, नंबर 1। नंबर 2, त्याग का भाव बढ़ा, दैट वाज अनदर थिंग दैट केम अप। विलिंगनेस टू एक्सेप्ट माई फॉल्ट, माई शॉर्टकमिंग्स, मेरे में ऐसा भाव था कि भाई मैं जो कह रही हूँ या कह रहा हूँ वही सही है। आई एम नाउ विलिंग टू, माई माइंड इज ओपनड अप दैट मे बी मेरा जो ओपिनियन है, व्यू है, वो एक्यूरेट ना हो। नंबर 4, नए टेक्स्ट जिनके बारे में बिल्कुल नहीं पता था वो पता चले, लाइक ब्रह्मजाल। नंबर 5, मेरी जो इम्पल्सेस हैं वो कुछ काम हुई। नंबर 6, इट री एम्फसाइज्ड फेथ, इट रिप्लेनिश्ड फेथ एंड पाथ की क्लैरिटी और बढ़ी। नंबर 7, जो शील के कॉन्टेक्स्ट में था, दैट सिंपली द फैक्ट दैट नॉट डूइंग हार्म इटसेल्फ is encouraged, is something that was new. So that's as far as new is concerned. What is not clear? There were some references to what happens after death, so that's not so clear. जो कंप्लीट लिबरेशन फ्रॉम संसार और रीबर्थ जो है, अभी भी इसमें विश्वास कर पाना मुश्किल है। नंबर 3, जो लास्ट सूत्र था उसमें एक एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन सच अ बिग सिनर लाइक अजात शत्रु बी डिजर्विंग ऑफ द बुद्धा's टीचिंग। नंबर 4, मनोमय काया और जिसको क्लोन कहा गया, इसके फर्क बहुत क्लियर नहीं थे। सो दैट्स 4 थिंग्स अबाउट व्हाट्स नॉट क्लियर। तीसरा सवाल था कि भाई अगर ये जो पिछले 3 महीनों की 4 सूत्रों की लर्निंग्स हैं, इसको अगर हमें जीवन में उतारना है तो इसके लिए और कैसे इनपुट मिलें। तो स्पेसिफिक नंबर 1 ये था कि जो डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंकर्स वाली बात है, क्या उसके कुछ गाइडेड मेडिटेशंस हो सकते हैं, दैट वाज 1। 2 ये था कि इनमें अगर हमारे ग्रुप में से कुछ लोग, इफ सम पीपल आर एक्चुअली कन्वर्टिंग दीज लर्निंग्स इनटू एक्शन इन डे टू डे लाइफ, then perhaps those people can be encouraged to share their experience कि उन्होंने कैसे उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जो भी वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उनको उससे क्या बेनिफिट हुआ। नंबर 4 वाज कि जो ये सूत्र की समरीज हैं उनको हम डिस्कस करें। नंबर 5 वाज कि जो ये सूत्र की समरीज हैं उनको हम डिस्कस करें। नंबर 6 वाज कि जो ये सूत्र की समरीज हैं उनको हम डिस्कस करें। नंबर 7 वाज कि जो ये सूत्र की समरीज हैं उनको हम डिस्कस करें। नंबर 8 वाज कि जो ये सूत्र की समरीज हैं उनको हम डिस्कस करें। नंबर 9 वाज कि जो ये सूत्र की समरीज हैं उनको हम डिस्कस करें। नंबर 10 वाज कि जो ये सूत्र की समरीज हैं उनको हम डिस्कस करें। नंबर 11 वाज कि जो ये सूत्र की समरीज हैं उनको हम डिस्कस करें। नंबर 12 वाज कि जो ये सूत्र की समरीज हैं उनको हम डिस्कस करें। नंबर 13 वाज कि जो ये सूत्र की समरीज हैं उनको हम डिस्कस करें। नंबर 14 वाज कि जो ये सूत्र की समरीज हैं उनको हम डिस्कस करें। नंबर 15 वाज कि जो ये सूत्र की समरीज हैं उनको हम डिस्कस करें। नंबर 16 वाज कि जो ये सूत्र की समरीज हैं उनको हम डिस्कस
रिप्ले करें क्योंकि काफ़ी एब्जॉर्प्शन अभी हमारी लिमिटेड है. सो दीज वर 4 थिंग्स. लास्ट क्वेश्चन वाज जनरली स्पीकिंग हमारे सेशंस को और इफेक्टिव कैसे बनाया जाए. सो देयर वर 2 points. Well, there are actually 5 points. I'm combining some of them. जो हम अटेंड कर the point is that people can be encouraged by explaining the benefits of chanting and the benefits of keeping cameras on as a means of increasing and improving fellowship. So whoever made this suggestion was also emphatic कि भाई ये सिर्फ हमें मतलब जोर जबरदस्ती से नहीं करना है बल्कि we repeatedly re-emphasize the benefits of these two things. दूसरी चीज एक ये उठाई कि भाई कई बार नए लोग जुड़ते हैं who are quite lost about what's going on and what the sessions are and you know things like that. तो किसी एक एक्सपीरियंस व्यक्ति का फोन नंबर दिया जाए जब कोई नया व्यक्ति जुड़ता है. That was 2. 3 was one session a week devoted to discussion or sharing about how any participant has implemented the teachings during the past week. उसमें एक एडेड बेनिफिट ये भी बताया गया कि ना केवल हमें स्पेसिफिकली सीखने को मिल रहा है कि और लोग कैसे टीचिंग्स को जीवन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बल्कि ये भी मदद मिल रही है कि भाई मुझे अपने थॉट्स को क्लियरली कैसे ऑर्गेनाइज करना है, मुझे एक्सप्रेस कैसे क्लियरली करना है जिससे कि प्रोलिफरेशन ना हो. सो इसके 2 आयाम थे. सो या दैट्स इट. Thank you, Vantaji. Thank you. Group 3 is going to present. Group 3 में कौन थे? I will try, Prasad. जी, thank you. मैंने इतना सिस्टमेटिकली नोटिंग्स नहीं बनाई, but let me try. तो पहले क्वेश्चन पर एक बात तो ये थी कि हमारे ग्रुप में 2 पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे जो कि रेगुलरली अटेंड नहीं कर पाए और जो कि उनमें से एक तो नए थे, इसलिए वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाए इसके बारे में कि लर्निंग्स क्या थी. बट फिर भी जो उन्होंने सीखा, जो उन्होंने सुना, उन्होंने उसको अपनी प्रैक्टिस में अडॉप्ट करने की कोशिश की, अपनी साधना में और डेली लाइफ में कुछ हद तक अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. एज फार एज न्यू लर्निंग, तो इन दो पार्टिसिपेंट्स के बारे में उन्होंने ये भी बोला कि जो भी हम अटेंड कर पाए वो सब कुछ नया था हमारे लिए, क्योंकि हमारा एक्सपोजर था ही नहीं इससे पहले कुछ. और in fact we had the benefit of one of the presenters in our this thing who said that before joining this sangha and before doing this presentation, and because of which he had to prepare a lot, he had little knowledge of the suttas, and although he read a lot of books, लेकिन इतना सिस्टमेटिक फॉर्म में परियप्ति को देखने का मौका उनको पहले नहीं मिला. तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था. Or about the learnings from various suttas, so I think this has already been summarized by both Yashika ji and Ante ji. There's nothing new to add, but one important point was that Mahanidhan Sutta was very helpful. It was a revelation for many people. और कि हमें इस ढंग से अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, rather than in the standard way. और साथ में just trying to remember what else was being said. हाँ, ब्रह्मजाल सूत्र से लोगों को काफी प्रेरणा मिली कि एक तो रॉन्ग यूज कैसे बन सकती है, और दूसरा साथ में ये भी महसूस हुआ कि जो बाकी रिलीजियस फिलोसफीज है उनके पीछे भी कुछ पीयर्स के एक्सपीरियंसेस है जो कि राइट हो या रॉन्ग हो, बट
those peers also meant well. They also based on Samadhi, but except that since they did not have an exposure to the principles like dependent origination, they reached some wrong conclusions and wrong views. That is the learning that some of us had about it. But otherwise, it was a very useful thing. The one common comment from everybody was that, हालांकि the material was spread out over a period of 3 months, it was still too concentrated to absorb fully. And I think even I subscribe to that because material बहुत ज़्यादा था और उसको पूरी तरह से absorb कर लेना ताकि हम उसको actually याद करके यूज कर पाए वो काफ़ी मुश्किल है और उसके बेसिस पे एक सजेशन ये भी थी कि किसी तरह से इन सूत्र की समरीज का एक्सपोजर अगर होता रहे तो शायद हेल्पफुल रहेगा. तो दैट वाज रिगार्डिंग द लर्निंग्स. डिफिकल्टीज लोगों ने यही बताई जो मैंने भी कहा कि डोजेज वाज टू कंसंट्रेटेड एंड दे नीड मोर टाइम टू फुली एब्सॉर्ब. तो उसके ये कुछ भी किया जाए तो दैट विल बी नाइस. Regarding the suggestions for adopting the teachings, and perhaps they said it is best done through practice in our sessions where some common difficulties that some of us face can be the themes of a brief discussion followed by a meditation session. For example, theme could be how do we remove the taints like anger or ill will or जी. That all, Professor? I think sir ड्रॉप हो गए गलती से या फिर उनका नेटवर्क अच्छा. चला गया. अच्छा. मे बी इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी. So we can meanwhile request group number 4 who's going to make presentation. Sir, that would be me. अच्छा, प्रोफेसर आ गए सुरेंद्र प्रसाद जी. Anything more you want to say? I think इसको audio just got connected. SPG आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे? I think your network was dropped. आप म्यूट पे हैं अगर आप बोल रहे हैं तो. I'm sorry I got disconnected, but I had more or less finished. So please Okay, thank you. continue. Thank you very much. Yes, Deepti, please go ahead. सर हमारे ग्रुप में ब्रह्मजाल सूत्र के लिए बहुत अप्रिसिएशन था because it helped this understand that how wrong perceptions can be a hurdle in the practice and can actually make one take a detour from what we are trying to achieve, and it will only increase our cycles in the samsara. So it is a priority to remove michha ditti. And sometimes the wrong view can all sound so logical and in these cases it has come from people who were in deep samadhi, and they may all be very logical because they were speaking from experience, yet it can be wrong. So that is very striking, and that therefore gives a lot of gratitude and more faith in the Buddha's teaching, because he was able to transcend all of those views and point the way beyond that. इससे ये भी समझ में आया कि सम्यक दृष्टि को अपने आप में भावित करना बहुत बड़ा एक टास्क है, एंड दैट्स एन इम्पोर्टेंट वन टू डू. हमें ये भी लगता था किसी किसी को कि देव जो हैं वो ही अल्टीमेट रियलिटी हैं, दैट्स द हाईएस्ट पॉसिबल इन 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 दिस वर्ल्ड और बियॉन्ड इन द लोकोत्तर. बट अब ये पता चला कि रेल्म्स को ज्यादा माइन्यूटली समझने का मौका मिला, और ये भी एक तरीके का शौक था कि अरूप लोक भी होते हैं जहाँ पे कि कोई मटेरियल बॉडी ही नहीं है. सो दैट वाज फॉर वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स. फ्रॉम द महानिदान सूत्र पटिच्च समुत्पाद को एक ब्रीफली तो समझते थे, पर इस डेप्थ तक उसको देखना समझना वाज अगेन वेरी
both inspiring and instructive. इससे ये भी पता चला कि इसको जाने और इसको प्रैक्टिस किए बिना मुक्ति संभव नहीं है। रिवर्स कंडीशनैलिटी की अंडरस्टैंडिंग से भी ज्यादा क्लैरिटी आई कि कैसे बर्थ रीबर्थ के साइकिल से बाहर निकलना है। इसमें एक जो पूरी की लर्निंग थी वो थी नाम रूप पच्चा विज्ञान की जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, दैट वाज अ न्यू concept and idea and relationship introduced, so that was good to know. Then in Sakka Panna, to see that how greed and attachment can lead to animosity and then to wars, so that one can relate in one's own life also. Papancha Sanya Sankha, yani judgments based on proliferation, so how they can be so erroneous, and that has led to a question and a request to learn how to go beyond one's especially old standing proliferation and perceptions. जहां हम पहले सॉल्यूशन साइकोलॉजी में ढूंढते थे, अब पता चला कि वो एक्चुअली भगवान ने उसके बहुत अच्छा मार्ग बताया हुआ है प्रोलिफरेशन के बाहर जाने का। फिर इसी सूत्र में एक जो कॉन्वर्सेशन सक और भगवान बुद्ध के में थी, तो वो जो पूरा एक रिस्पेक्ट का भाव था और वो आदान प्रदान अपने आप में ही बहुत कुछ सीखने को देता है। इसी सूत्र में सम्मा वाचा पे भी एक एस्पेक्ट था कि कैसे मॉडरेट पेस ऑफ स्पीच हो, राइट टाइम हो, वाणी का कर्म जो होता है उसको बहुत ज्यादा उसका अपना एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग कर्म बनता है। तो इट इज वन हैज लर्न दैट टू स्टे अवे फ्रॉम बैक बाइटिंग। तो बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पे ये बातें कि भले ही चित्त के अंदर प्लेजेंटनेस नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्त जब आप करें तो प्लेजेंट टोन में ही बोलें। ये सब भी सीखने को मिला। एंड देन ये भी सीखने को मिला उसी तरह की देवता जो है उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनमें भी राग द्वेष होता है। सो दैट वाज आल्सो सरप्राइजिंग फॉर सम ऑफ अस। देन सामान्य फल सूत्र के अंदर तो इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो पता चली, तो दैट वाज वेरी वेल प्रेजेंटेड आल्सो, एंड दैट अनरावेल्ड द होल थिंग एंड नोबल ट्रूथ्स एंड एटफोल्ड पाथ। इस सबको इसके ये जो एंगल था इससे अंडरस्टैंडिंग डीपन हुई है। झानास के बारे में भी काफी चर्चा हुई, और एक जो दलदल वाली बात थी कि गृहस्थ जो है वो गहरे दलदल में चल रहा है, तो एक ये भी विचार मन में उठा कि अपने दलदल तो है, लेकिन उस दलदल को कैसे कम किया जा सकता है अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही। और इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेंशंस एंड एक्शंस दैट बिकेम मोर क्लियर। एंड देन श्रुत धन की भी बात समझ में आई। अब कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न ये हैं कि एक तो ये कि कई बार ऐसा सक्का पन्ना में भी आया था और हम आपने भी कई बार रेफर किया है कि कुशल अकुशल यही व्यक्ति डिस्टिंक्शन समझे, तो वो भी अपने आप में एक प्रैक्टिस है। तो वन वुड नीड मोर गाइडेंस अराउंड दैट। Then how to develop the art of action with detachment. और 24/7 सती और नॉन सेल्फ को कैसे प्रैक्टिस किया जाए। And how to overcome proliferating tendencies. And then of course retention of what we have learned in Vasa, वो तो पहले भी बोला गया है। Then in terms of what to do more, तो I think and in session से practice की जाए क्या, तो ये तो absolutely there was a resounding yes to it, and ये भी कहा गया कि अगर offline sessions भी किए जा सकें for going deeper, that would be beneficial. Then suggestions for improvement was that one was just about the slides की we have to be careful, माइंडफुल कि स्लाइड्स ऐसे रहें ताकि वो इवनिंग सेशन में जब चलाए जाते हैं तो भी वो फुली विजिबल हो, टेक्स्ट को इस तरीके से प्लेसमेंट किया जाए, एंड नॉट टू मेक वेरी टेक्स्ट हैवी स्लाइड्स। जब हम सुत्ता डिस्कशंस करें तो इफ वी कैन हैव रिलेटेड सुत्ता डिस्कस, देन इट हेल्प्स इन स्टडीइंग द सेम सब्जेक्ट विद मोर डेप्थ।
फिर डेली सेशंस जो होते हैं तो उनमें कभी कभी ऐसे क्लिप्स चला दिए जाएं, जैसे 20 मिनट के शॉर्ट क्लिप्स, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत मटेरियल है, एंड प्ले देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे अगर 5 हिंड्रेंसेस पे तो उसी को 2-4 बार अलग अलग बार चलाया जाए, ताकि वो थोड़ा इंटरनलाइज हो जाए। And then if potentially people can form groups and then maybe practice for longer time on one or two of their sankharas or some of the aspects that they want to develop for themselves, और वो महीना 2 महीना ऐसे करके किसी 1-2 टॉपिक पर ही अपने अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस बट ग्रुप फॉर्मेट में करे, तो दैट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल. That is it. Thank you. That was a lot. Thanks. Thank you very much. Thanks to everybody for such a wonderful feedback you have given to me, and I think it'll take some time to assimilate all of that, and I'll discuss with Banteji, and then we'll see how to really go about implementing it in future in a proper manner. Some of the things are obvious, which I think since I attended some sessions also, each of them for some time, so I got some clue as to we can build upon these suttas. ये 4 सूत्र जो हमने किए हैं, इनको और गहराई से समझने का प्रयास कर सकते हैं, उनको प्रैक्टिस में कहाँ पे हमारी प्रैक्टिस में आने वाली बातें हैं. कुछ चीजें मैंने अपने कल की प्रेजेंटेशन के लिए रखी हुई है, बनाई हैं, तो उसमें शायद कुछ और इश्यूज आएंगे. we'll see them. एक सेशन जो मुझे लगा सेशन में आपने भी कहा कि आपस में एक डिस्कशन मोड रहे, ताकि हम अपनी क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकें. तो वी कैन क्रिएट, वी हैव ऑलरेडी a daily meditation groups, daily sessions group that you can use as a discussion group for certain topics. जैसे सुत्ता सेंट्रल का डिस्कशन ग्रुप है, और भी कई डिस्कशन ग्रुप है. You can use that daily sessions group, or maybe we can create a group for that purpose. We can talk to Banteji and see what he suggests, where we can have very focused discussion only on Dhamma topics, not on anything else. Say this issue, suppose we have certain questions on one sutta, one issue, and we discuss it. Say the issue of Paticca Samutpad or cankers. What are they? What are the asavas? Why do you sometimes call them asavas? Sometimes you call them Anushaya, sometimes you call them Nivaran, and what's going on there? So these questions which can be added up, and then we can have a kind of a chain of, on one question at a time, we can have a chain, everybody contributing his or her opinion, and then hopefully formulating some overall consensus that this is what the answer to the question is. So I think that could be implemented right away. Maybe I'll talk to Banteji whether we should go with the daily sessions group or have a separate group, because in daily sessions group we have other discussions also happening, but we can discuss that. That could be easily implemented. और जो आप लोगों ने कहा कि हाँ इस सुत्तों को भी हम डिटेल में पढ़ें, तो we can play some clips. Banteji has been doing so much effort, and along with Nikhil, in trying to extract out the clips out of our discussions and then putting them in a form कि वो एक summary के form में हम उसको दोबारा सुन के उन पे चर्चा कर सकें. This I think should be possible for us to do immediately. And regarding the other questions and suggestions, we'll really look into them. How do we go about one by one? Maybe some guided meditation आपने suggest किया on certain specific topics. We can definitely do them. Short guided meditations, so that we can practice these over long periods of time. Repeat them over a week or something, so that a particular topic is properly addressed. That can be done certainly. Regarding benefits of chanting sutta and so on, we have discussed it already, but we can play those clips in which we have discussed those benefits of chanting and benefits of studying sutta.
and benefits of keeping the cameras on. This also we have discussed more than once, and how it promotes a more involvement with each other. This becomes more like a live session because we are seeing each other constantly. Otherwise, it becomes a person is talking to black boxes, which doesn't motivate the person also much. So that I think I would request again to implement it right away. Don't worry. As soon as possible, we may have some, and whenever there is any this kind of a, for example, we're just two people and some person comes on there and some ring goes on the bell, we have to attend. So that's okay. It doesn't matter. It's a family. We are all sitting together, and if there are difficulties, we handle each other. We take that in the stride. We don't get concerned about that too much. I found some questions were good about गृहस्थ की दलदल को कैसे कम करें. I like that presentation. And Sati Sampajanya, we've discussed it often, but certainly it's worth repeating. Overcoming proliferating thoughts, yes, element. Some discussion will be there and tomorrow. Just a very brief points will be presented there on the basis of the suttas we have studied. So thank you again. I think I'll put them in a proper manner and discuss with Bhanteji and see how do we really go about in future to make our sessions more meaningful and more useful. Please continue to join, especially when we have a session like Vasa. If you miss it, too many sessions in between, then it becomes very difficult to follow. So whenever you have a concerted effort on a certain topic, it will be good to try to join it regularly. If you can't join, at least listen to the video immediately within that very day. Listen to the recording so that you are up to date with the next session. Thank you. I think that should be enough from my side. Maybe Bhanteji wants to say some things. Yeah, very nice. I thought it was very rich.